एक दिन पड़ेगा पानी पीने के लिए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कोई आएगा या इतना ही आते हैं? नहीं सर, आओ ज्वाइन कर दे। हाँ, आएंगे। हाँ ये जो मैं वर्ड फाइल एक शेयर किया हूँ वो दिखाई देता है तुम्हें? हाँ सर, दिखाई देता है। ठीक। अभी और इंतजार करेंगे या इसमें स्टार्ट कर देंगे? सर 5 मिनट के अंदर सब आ जाएंगे सर। हाँ 5 मिनट का बाद सब आ जाएंगे। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
Hello. Good evening, sir. Good evening. Let's start the class. ओके सर। हाँ, कितने स्टूडेंट एक्चुअली आएंगे और नहीं तो इंतजार करते हैं सबको? सर हो जाएंगे 30 सर। plus sir. 30 plus. अभी जितना आए हैं वो आप जानते हैं इतना ही आएंगे ना, और कुछ ऐड करने वाले? 50 और प्लस आएंगे और आएंगे सर और आएंगे। तो और 5-7 मिनट इंतजार करते हैं। No sir, class start कीजिए। ठीक है, तो टुडे आई विल टीच टुडे आई विल टीच द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो ये आपका साउंड म्यूट कर दो। अर्चना पंडा है, म्यूट करନ୍ତୁ। हेलो, आपका साउंड सब म्यूट कर दो थोड़ा। ये जब क्वेश्चन पूछना हो उसी टाइम आप ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इन ऑर्डिनरी सेंस क्लासिफिकेशन, ये आपको सब दिखाई दे रहा है ना, जो मैं वर्ड फाइल क्लियर किया है? हाँ सर। दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, हाँ सर, जूम करने से दिखाई दे रहा है सर। यस सर। ठीक है। Yes sir, दिखा रहे हैं। हाँ ठीक। In ordinary sense, classification is a mental process. When we will, somebody is told classify the student of a class. There are two gender present in a class, girls and boys. In mental process, you can separate them, boys and girls. That's why. We group or separate ideas and objects in a systematic manner. Where library classification means the arrangement of books on the shelves in a systematic manner by using certain classification scheme. All you know about the library classification scheme? Any idea? There are most popular classification scheme are due decimal classification DDC and UDC universal decimal classification and column classification. And due decimal classification is devised by Melville Dewey on 1876. 1876, and it's this is the first edition came. And universal decimal classification, these two UDC and CC, these are not in your course, but as a library science student, I told you for your for the future. And UDC is devised by Paul Otlet and Henry LaFontaine in 1895. And column classification is devised by S.R. Ramanathan, who is our father of library science, in 1933. And this is the most popular, most essential thing. DDC always use pure notation. Pure notation means DDC use only a dot as a symbol to in the preparation of class number. And UDC and CC both are used mixed notation, means they used colon, semicolon, double colon, comma, hyphen, numeric and alphabet, and some other symbols are also. I prepared a table
from the beginning of the release of DDC, and this is the first edition came in 1876, which was only 44 pages, and 1000 copies are printed at that time. And second edition was released in 1885, which page is 314, means more subjects are added. When the first edition came in as 44 pages, only some subjects are available, and in second edition, Melville Dew added more subjects. That's why the subjects are grown gradually. As our in your syllabus, we 19th edition. 19th edition that came in 1979, which page was 3,361, and now the latest version of DDC is 23rd edition, which was released in 2011, which page is 4,266. Means in comparison to 19th and 23rd, some subjects are new subjects are added in 23rd edition. In 23rd edition, you never get the new subject coronavirus. Maybe it came in 24th edition, though it is a new disease. Came in inverse in 2019, so it means it will added in future edition as 24th edition. As per our course curriculum, we supposed to use DDC 19th edition. It has 3 volumes. First volume is table, second is schedule. Means in the schedule, the whole universe of knowledge is available as a subject and different discipline. And third one is relative index. Like a dictionary, alphabetically it is subjects are written in the relative index. Some subjects on main class number are you can find as a alphabetical basis. Division of main classes. EDC 10 major 10 classes. These classes are notationally as generally. Voice is not audible, sir. Voice is not audible. Not audible, sir. No, sir. मैं तो फैन सब बंद कर दिया, फिर भी नहीं आ रहा है। अभी सुनाई देता है? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. 000 is computer science and generalia, and 100 is philosophy and psychology. so 200 is general area generalia means here you will find library science, some common subjects like computer science and library science, where in library science you read both management, computer, this type of subjects are you will find in the generalia, because in economics you only find the economic subjects like economics, but in library science you read management, computer science. That's why this type of subjects are available in general. Clear? And 300 is social sciences, and 400 language, and 500 is pure sciences, 600 is
technology, 700 arts and recreation, and 800 literature, and 900 history and geography. In each main class, um, yeah, mute all your speaker. Hello. या आपका स्पीकर से म्यूट कर दो. Each main class has 10 divisions, including a general division, that is the class itself subdivided into characteristics peculiar to itself, applicable to all 9 divisions, where we have therefore 10 main classes and 10 divisions. It means a main class also works as a division. Means each main class means 100, 200, 300. These main class are is also divided into 10 subclasses. Means here I am giving one example. It's 600, that is technology, where 610 is medicine and health, 620 is engineering, 630 is agriculture, 640 is home and family management, 650 is management and auxiliary services, 660 is chemical engineering, 670 is manufacturing, 680 is manufacture of product for specific uses, and 690 is construction of building. Just I am giving one example, main class of 600. So each of 100 division has been further divided into 10 sections. A division also acts as a section, the generally a section that precedes all others. For example, here I am also divided 610 medicine and health as in 10 subdivisions. Means 610 is medicine and health. Here 611 is human anatomy, cytology and histology, and 612 is human psychology. These are all available in the second volume of DDC. Clear? And here 619 is unassigned. Means DDC still it is lying vacant, the number 619. In future it may added. After that, the main thing in classifying a subject, it is categorized into the work procedure is divided into two parts. First one is subject analysis, and second is locating class number. Here the subject analysis and locating class number, it describes the first two phases in process of library classification, namely subject analysis and class number assignment. The work of practical classification in essence is to find an appropriate place for a document in the overall scheme of subjects given by the classification system in use. It is mainly based on the subject content of the document, though library classification is more than content analysis and coding. Practical library classification consists two phases. In ordinary sense, you can tell first is the medical diagnosis and second one is prescription and dispensing of medicine. And thus a classifier who classifies the book called as classifier. Thus a classifier has to sort out different aspects of the given document, namely carefully listen, one is a topic, second one is a discipline, and third one is a specific subject and its scope, and fourth one is viewpoint, and fourth is bibliographic form and physical format. So once this analysis is done, the only task is to left assigning decimal classification of the DDC. So how to assign a class number to a book? Here, the best way to enter the due system is through its schedule,
the alphabetical index provided, the volume third, which is a dictionary pattern. The main classes are arranged in alphabetical manner. You can also search the subject from there. But if a book has lengthy title, means history of India, then this number you could not find in the relative index. So you have to follow the second volume, the schedule part. Here I am giving one example. The simple example is guitar music. From where the number guitar music you will find from the schedule. Here we know that with little experience, the main class of the music is 700, and the division is 780 is music. Furthermore, scanning the section of 780 in the third summary, we find 787 is stringed musical. Means जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में तार यूज होता है, this is stringed musical instrument suitable for this title. So by scanning through each subsection and further division, we find 787.87 to the number which exactly fits our title. Here I am prepared one slide. This is inverse of knowledge. Here the generalia 100 is philosophy, likewise 200, 300. Here 700 is arts. Here 800 is literature, 900 history. By scanning 700, we find 780 is music, and in 780 we find 787 as string music, and in the string music in 787.8 is plicutral lute family, where we'll find the guitar in 787.87. So classification has already been framed in the DDC. We have to find out. We have to search and find out the actual. आपको उसी शेड्यूल से वो तो एक्चुअली ये ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि आपके पास ये रहना चाहिए, शेड्यूल रहने से थोड़ा ठीक रहता है, मगर ये ऑनलाइन क्लास है, ये जस्ट आई विल टेल यू द प्रोसीजर हाउ टू बिल्ड नंबर इन प्रैक्टिकल वे. When the offline class start then we will follow the tips. Okay, and ये स्लाइड विजिबल होता है, ये पीडीएफ विजिबल हुआ था लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं. ये तो क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम 100% समझ नहीं सकता है. वो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये सब टिप्स दे देता हूँ. बाद में जब ये पीडीएफ फाइल भी डीडीसी का मिल जाता है, वो घर में प्रैक्टिस करो. कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे फोन करो, नंबर दे देंगे तुम्हें, फोन करके. हाँ, you only just support us. हाँ, यस. और उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो प्रैक्टिकल है. वो ऑफलाइन क्लास होने से मैं तो अच्छी तरह से ये कर देता, मगर ये तो नहीं है. हाँ सर, आपका नंबर दे दीजिए सर. नंबर लिखो 9658. जी सर. 9658 263144. 2631 44.
44। सर ये व्हाट्सएप है? नहीं व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप नंबर भी लिख दो 99658 56772। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ये पीडीएफ फाइल दिखाई देता है? यस सर, पीडीएफ क्लियर दिखा रहा है। हाँ, ये एक्चुअली मैं जो पहले क्लास लिया था उस डायरी को मैं स्कैन करके दिखा रहा हूँ, वो जो ऑफलाइन क्लास में। ठीक है। how to build class number by using DDC. There are 6 rules. This is known as synthesis through add to instruction. As per the instruction, अपने हिसाब से आपको नंबर नहीं करना है। As per the instruction given in the DDC schedule, in the particular subject, you do the class number as per the instruction of the due decimal classification, not of your own. So there are 6 rules. First one is add to from 001 to 999. This is the main classes from 001 to 999. जितना नंबर है वो जो 001 to 999 उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मतलब और कुछ शेड्यूल टेबल में जाना नहीं, सिर्फ 001 to 999। अगर आपका एक नंबर है बायोकेमिस्ट्री, now it is this subject is available in the schedule. When the subject is not available by chemistry, then biology and chemistry, these are 2 main classes. Chemistry is 540 540 and by chemistry, and biology is 570. These 2 number will add. How these 2 number will be added, I will teach you later. Then second rule is add to a class number from some other small portion of the schedule. And don't worry, this PDF file I will share in your WhatsApp group after class. Then third one is add to from the same division or section. And fourth one is add to through special provision. And fifth one is add from any internal table given for that class, internal table. And sixth one is add from any of the table in volume 1. Volume 1 means it compiles 7 tables are there. That's why it is called the volume as table. Then first rule is add to from 001 to 999. How you will add the number from 001 to 999? By example, I will show. After that, you will in offline class you practice from the schedule. Addition of any number from the whole schedule from 001 to 999 to any given base number. These main classes we can also tell it as base number. Example is classification of books on mathematical analysis. Classification of books on mathematical analysis. Tell me what are the base number in this title? Base number. One is the classification of books, means this classification part is one subject from one subject group, that is library science, and the second one is mathematics. There are 2 class numbers, means one from general year and the second one is from pure science, that is mathematics. So here classification means library classification and its class number is 025.46. This
025.46, it is available in the schedule, volume 2. And in the schedule, you find the instruction to add notation 001 to 999 to the base number 025.46. This from below the 025.46, this instruction is available. So from the means class number for mathematical analysis is 515. From the schedule, you will find the number mathematical analysis is 515. This is the base number. After that, you have to join the class number by a simple addition. Means 025.46.5 plus 515, and the result is 025.4.46. This is the classification of books, and simply you add the 515 in the right side of the number. कुछ समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्लियर नहीं हुआ ना, थोड़ा थोड़ा है। एक्चुअली मैं जो पढ़ा था वो आपके पास अगर शेड्यूल होता तो उसी हिसाब से आप ये कर सकते हो। एक काम करो, जो ईच स्टेप आता है टाइम में प्रॉब्लम रहता है तो पूछ लेने से मैं उसी हिसाब से समझा। सर हम क्लास नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्लास नंबर को ऐसे ये जनरलिटी से वो शुरू होता है शेड्यूल से, 00 से 999 तक है। आप नंबर वाइज जैसे 00 इट इज कंप्यूटर साइंस एंड जनरलिटी। अगर आपको कुछ आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स तो आपको कहाँ जाना है, उसी 00 से शुरू होकर जब आता कब आएगा 099 तक, उसी के अंदर आपको आ जाएगा कंप्यूटर साइंस का ये। इसलिए पेज बाय पेज यू हैव टू सॉल्व this main classes you have to memorize. Main classes 001, 100, 200, these main classes you should memorize. If you will memorize the mathematics number 510, then easily you go to the page, pure science pages. And economics is 330, means economics is comes under the 300. Social sciences, that's why you have to memorize. सर ऐसे कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, 001 to 999 तक उसमें है। उसमें 00 अब तो दिखा है ना, 000 कंप्यूटर साइंस एंड जनरलिटी, 100 इज साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 is the religion. The whole religious subjects are available in 200. Means Hinduism, Buddhism, this type of number you will find in 200. 300 is social science. In social sciences you will find economics, management, political science. This type of number you will find there. And in 400 is the language. This type. And सर ये पूरा लिस्ट कहाँ से मिलेगा? तो मेरे पास है एक पीडीएफ फाइल, मैं ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वो मेन क्लासेस 10 सब डिविजन्स एंड 100 सब डिविजन्स एंड 10 सब डिविजन्स आर अवेलेबल. आई विल शेयर. Okay, these are some examples, and this second example is the library classification of Indian philosophy. Indian philosophy. Try to understand library here. Library classification. This number you will find in generality 025.46. Clearly, the library classification number is available in DDC. DDC volume 2, and here Indian philosophy. Indian philosophy means you will find the number in 100. Philosophy, psychology and philosophy, where Indian philosophy is available, that is 181.4. Means in DDC it use pure notation. I tell you before, it use only one dot. Here you will find two dot. One is
025.46, another one is 181.4. So how it will join? DDC use only one dot in a class number. So here simply add this number is 025.46, and after that 181.4. Here eliminate the dot, simply add the number 181.4. Means this is the class number, is the library classification of Indian philosophy. This is the result. And another example is science library. Means here science is the pure science number, that is 500, and library number is 026, which you will get in the generality. So here science library, which is the main base number. Here there are two base number, one is science and another is the library. So science library means which base number is you will find the used as a basic number. Science library means if library is not available, then which type of book you will find? Means library is the basic. लाइब्रेरी में साइंस का किताब रहता है, अगर लाइब्रेरी नहीं होगा तो साइंस का किताब कैसे रहेगा? इसलिए लाइब्रेरी है बेसिक नंबर. सो यू हैव टू prepare the class number library as a main base number. So 025.500. So in right hand side 0 has no value, so 026.5. Sir, Huh? sir, what is the need of this classification class number in library science? तो बोला शुरू से अरेंजमेंट ऑफ बुक्स. अगर एक लाइब्रेरी में अगर 1000 किताब रहता है तो इजीली यू कैन फाइंड. इफ लाइक पब्लिक लाइब्रेरी वेयर मिलियंस ऑफ बुक आर देयर, इफ सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट वाइज अगर अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो कैसे बुक्स का यूज कैसे होगा? इसलिए सब्जेक्ट वाइज यूज करने के लिए अरेंजमेंट करने के लिए क्लासिफिकेशन नंबर जरूरी. Okay, sir. Thank you. Another example is library of library information science. Libraries of library information science. Here the main base number is 026, means library, and the second one is the library information science, means your course library information science. This number is 020. Then simply add this number 026.02, and in right hand side 0. The subject is fully practical or not? Subject is fully practical or not? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Practical means subject is practical. Sir, theoretical or practical? ये classification is a practical part. This is for complete practical part. Another example is science journalism. Here two base number. One is science is 500, and second one is journalism. In generality, you will find this number journalism 070.499. Clearly, this number is available in the DTC schedule. So science journalism means here base number is journalism. So journalism number will came first, 070.499 plus 500. This is the synthesis part. When you will add the number, this is the synthesis part, and this is the final class number 070.499, and simply add 5. Here in right side 0 has no value. I have given some
examples. You will try after class. You will try and come to the second part. Second part is add to a class number from some other small portion of the schedule. From other portion of a schedule. Other portion. It is a specialized extension of the instruction add to from 001 to 999. In such cases, instead of adding the whole class number to the specialized base number, a portion of a class number is added. Here, the common digits from a series of class number are removed and the digits following the generic digit are added to the designated base number. थोड़ा केयरफुली देखो, ये इम्पोर्टेंट है। वो जो पहला जो रूल था वो दिस इज द सिंपल मेथड। Here I am giving one example. Is a Buddhist philosophy. Buddhist philosophy means Buddhist is came from the religion, and philosophy is the philosophy number. Philosophy and psychology is from 100 main class 100. Here you will find the Buddhist number is 294.3 and philosophy is 181. Here how to derive the number? To derive the class number from any specified religious philosophy, we are instructed under 181.04 to 181.09. In the schedule from 181.04 to 181.09, there are one indication, means one instruction is available for the classifier how to join, how to add the number. To add the number following 29 in 294 to 299. If थोड़ा इमेजिन करो, वो जो 181.04 to 181.09 उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर 294 और 299 इसी बीच का कुछ नंबर आता है आपको क्लास नंबर बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है? add the number following 29 means after 29 the number, which number means here Buddhist is 294.29, 294.3 is the Buddhist number. Here the DDC schedule told instruction given add the number following 29 means the 29 after the number 29 means 43. The number 4.3 will be add. समझ में आता है? ये 29 after the number in after the number 29 means 29 को ऐड नहीं करना है, उसको 29 को हटाने के बाद जो नंबर रहता है उसी नंबर को सिर्फ ऐड करना है, like this 181.0 is the philosophy plus 294.3, ये 29 को ऐड नहीं करना है, तो रिजल्ट क्या होगा? 181.043। समझ में कुछ आया? हेलो? नो सर। समझ नहीं पाए? नहीं सर। कहाँ प्रॉब्लम हुआ बताओ तो, कहाँ प्रॉब्लम हुआ बताओ। देखो, अगर इस टाइप का एक कुछ नंबर आता है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, देन वेयर फिलोसॉफी नंबर इज 181.0 इज द फिलोसॉफी नंबर। इन फिलोसॉफी नंबर 181.04 to 181.09 मीन्स 181.0 to 03 उसमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं है। पर्टिकुलर .04 to .09 उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर उसी में
रिलीजन का कुछ नंबर आता है, रिलीजन का नंबर कहाँ से दिया है 2942 उसी के बीच अगर कुछ नंबर आता है तो 29 को छोड़ के जो नंबर रेस्ट नंबर रहेगा उसी नंबर को सिर्फ ऐड करना है। 29 और these are all common numbers, this 29 will not be added to the base number of philosophy। आया समझ में? हेलो हाँ सर, अभी आया। है। जो बेस नंबर है फिलोसफी उसी नंबर में जो रिलीजन का नंबर ऐड करना है, पर्टिकुलर 294 to 299 के बीच जो नंबर आएगा उसमें 29 को नहीं ऐड करना है। 29 के बीच बाद जो सब नंबर आएगा उसे ऐड करना है, डॉट तो हटाना है, एक ही डॉट देना है, इसलिए ये 43 सिर्फ 43 ही ऐड होगा। देन गो टू द सेकंड एग्जांपल। सिमिलरली Confucian philosophy. Here philosophy number is same 181.0 and Confucian. What is the class number? Number will be added 181.0 and just removing 29, the rest number will be added 9512. This number. The instruction is available in the DTC schedule. Then each part of philosophy 181.04209, the there is a star mark and the instruction is available. These are the same example is from philosophy and religion. Then another example is the wages of agricultural labor. Wages of agricultural labor. Here there are two base classes. One is the wages, which is come in the social sciences in economic part. Another one is the agricultural labor. These are also a base number. Agriculture means it is come under the technology part. 630 is the agriculture. 600 is the technology, where agriculture comes under that. And the agriculture number is 630. Then wages number is 331.204. Then how to add this number? In wages part, there is a instruction just to remove the base number of agricultural labor is 600. After that, just join the number. Then the number is 331.204.43. Then the 6 will be removed. The instruction is available in the schedule. Another example is animal physiology. Here animal physiology number is this is a clear number 571.1. Here one instruction is available is to add to 571.1 the number following 59 in 591 to 599. How to build the number? Just I am telling. Hello. Sir. सर अपन एटा जो कहउछन सेटा टिके शेयर करिवे कि माने आउ टिके इजी होता अंडरस्टैंड पे माने ए जो येटा माने देखा जाउन तुमको? नहीं सर। ए जो पीडीएफ फाइल ता देखा जाउनी? नहीं सर। मैं शेयर करथि और आपको बताता हूं आगे ଏବେ ଶୋ କରୁଛି ଶୋ କରୁଛି सर। ତମେ ସେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ତମେ କହିବା କଥା ନାହିଁ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି ବୋଲି। ଫାଷ୍ଟ ରୁ ସାର୍ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ କିଛି ସମୟ ଦେଖାଲା ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଦେଖାଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ନଗଲା ତୁମ କହିବା କଥା ନା ମୁଁ ଏତେ ଦେଖେଇ ଗଲି ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି କୋଉ ଜାଗାରୁ ପଳେଇଥିଲା କୁହ ସେଉଠୁ ଆଉଥରେ ନେବି ମାନେ କୋଉ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ନା ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଇ ମୂଳରୁ सर लास्ट जो आपण चार्ट टा करथिले सर सेटा जो गिटार पर्यंत सर कोटा गिटार पर्यंत सर जो और सीधा देखा एटा ताले बिल्कुल देखा जाएगी नहीं सर हां ताले एटा मु आउथरे कहि दउ practical number to build the class number in DDC there are 6 methods these 6 methods we are not designed these methods are instructed in the DDC schedule means DDC DDC ओपन करंतु पीडीएफ टा सर पीडीएफ टा ओपन करंतु पीडीएफ टा ओपन है नहीं हां सर पीडीएफ टा ओपन है नहीं ଆସିଲା सर एबे तो आपन को फेस देखा जाउची ये आसीनी पीडीएफ एबे गोटे हां सर पीडीएफ अभी डॉक्यूमेंट टा देखा खोलिला गला सर सब देखा गला ये सर देखा गला by build how to build the class number through instruction तमरा म्यूट कर दिया जो दरकार है to build class number through instructions which are available in DDC schedule there are 6 instructions one is add to from तमरा म्यूट कर दिया add to from 0012 999 and second one is add to a class number from some other small तमरा म्यूट कर दिया हेलो synthesis through add to instruction which are available in the DDC schedule. First one is add to from 0012 to 999 and second one is add to a class number from some other small portion of the schedule. Means if the main class is 300 then we go to the small portion, this means 330 or 331, that's right. And the third one is add to from same division or section. And fourth one is add to through special provision. If some special provision is given in this DD schedule, as per the provision, we will add the number. Then fifth one is add from any internal table given for that class. Internal table means in the volume 2, in some main classes, some table is there. By using that internal table, we build the class number. And see, last one is add from any other table in volume 1. Volume 1 is a table part. By using this table part, we will join also number. We will build class number.
Then go to the rule number 1, that is add 2 from 001 to 999. Means these are all main classes 01 to 999, using the number by only from the main class number. The here rule is addition of any number from the whole schedule, that is 001 to 999, to any given base number. Here I am giving one example, that is classification of books on mathematical analysis. Means there are two base number. One is the classification and another one is mathematics. Here classification came under the library science, and mathematics is also the base number. This is 510, and here classification is come under the library science. Here the classification number is 025.46, and the mathematical analysis in 510 mathematics, the mathematical analysis number is 515. To join these two number, just in DDC it use only one dot. So 025.46 plus 515. This is the synthesis part. In practical, you return the answer like this plus 515, and the final call number class number is 025.46, and just add this 515 number without any dot is 515. The final answer is 025.46515. And came to the second example. Second example is library classification of Indian philosophy. How to join these two number? One is the library classification is 025.46, and Indian philosophy you will get in the philosophy and psychology portion 100. Here the number is 181.4. In the volume 2 you find this number in psychology and philosophy part in 100. Just simply join the number without any dot. এটা সব ঠিক বুঝি হউছ তো? হ্যালো ଆଜ୍ଞା sir, মানে আর আউ एग्जांपल দেবি না, মানে সেকেন্ড রুল কো ଯିବା সেটা বুঝিলা, মানে লাইব্রেরিটা বেস রহিব, সে অনুসারে গোটে পয়েন্ট রহি কি এড হবো। जोटा बेस नंबर तुमको सेटा दिए इमेजिन करिया पड़िबो। माने कोन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी रही पारे, किंतु लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम जे नथिबो तमरा ये मान सेटा केमती रही परिबो ना। तो सर जदि हमें इंडियन फिलोसफी न पढ़िबा ताहले तार फर्दर क्लासिफिकेशन टा केमिति आगे आसीबो? एटा इंडियन फिलोसफी मेन क्लास जीवा कथा ना। इंडियन फिलोसफी मेन क्लास जीवा कथा मने करो तुम आज्ञा इंडियन फिलोसफी से तार थाउ आ तार जदि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ता तुम माने तमरो इंडियन फिलोसफी रो बही अछि हला, तमरो बही अछि। जदि माने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन माने तुम बही किनी कोड रखियो, लाइब्रेरी रखिले सिना तुम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करिवो। बुझबछन नै? तमर जदि लाइब्रेरी नथिबो ताले लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन केम दिबो? ता माने एटा ए पार्टटा बिल्कुल रहिबोनी। इंडियन बही बुक एग्जिस्ट रहिबो, तमर सब बही रहबो, माने लाइब्रेरी रहिबोनी, ताले ता क्लासिफिकेशन काई करियो? इते बही अछि माने सेटा क्लासिफिकेशन हबो। इते ए जगह रे बेस क्लास होजी क्लासिफिकेशन, नले बही इंडिविजुअल रहिबो, जे किनिबो निजे रखिबो, निजे रखले से क्लासिफाई काई करियो? इते एठी होजी लाइब्रेरी होजी बेस नंबर हला। आज्ञा सर आज्ञा। आ गोटे एठी अछि देखो साइंस जर्नलिज्म माने एटा कोन साइंस से तो माने जेमति हमर लाइब्रेरी साइंस करा हो सेतर साइंस खाली गोटे जोड़ा है छी, माने साइंस ता कोन गोटे मेन क्लास ता अछि कि गोटे जोड़ा है कि करा है लाइब्रेरी साइंस हला 0 to 0।
ସେମିତି ସାଇନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ମୋର ଯେମିତି ତମର କରା ହଉଛି ବହି ବହିରେ ବହୁତ ଆର୍ଟ୍ସ ବହିରେ ବି ସେମିତି ସାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେନ୍ସ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏଠି ସେମିତି ଲେଖା ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଏଠି ସାଇନ୍ସ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତମର ମେନ୍ ବେସ୍ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ସାଇନ୍ସ ଟା ଯଦି କରିଦବ ଭୁଲ ହବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଇନ୍ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ଏଠି ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ତମ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଇନ୍ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ମାନେ ତମର ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଯଦି ନଥିବ ସେ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ହଉ ଯାହା ଯୋଉଠି ହଉ ମାନେ ସେଟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଦଉଛି ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ବୁଝିକି କରିବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତମର ଯଦି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନଥିବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ ମାନେ ଡ୍ରଇଂ ହଉ ସେମିତି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି ଦେଖିକି କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫ ବୁକ୍ ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ on Indian history. Indian history acquisition ମାନେ ଜାଣିଛ ତ acquisition means procurement of book in libraries on Indian history ର ବହିଟାକୁ କେମିତି ତମେ procure କରୁଛ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଯେମିତି acquisition of books this number is available in DDC 025.27 and Indian history is 954. Then just simply add the number without any dot. Then come to the second rule. Second rule is add to a class number from some other small portion of the schedule. It is a specialized extension of the instruction add to from 001 to 999. In such cases, instead of adding the whole class number to the specified base number, a portion of a class number is added. Here, the common digit from a series of class number are removed, and the digit following the generic digit are added to the designated base number. So here example is Buddhist philosophy. Here philosophy number is 181.0, which is come from the philosophy and psychology main class 100, and Buddhist is came from the language main class 200. Means here to derive the class number for any specified religious philosophy, we are instructed under 181.04 to 181.09. In this number 181.04 to 181.09, there is a instruction is available from the DDC to add the number following 29. Means in Buddhist number 29.294.3, the 29 will not the 29 will be removed and the 43 number is added in the philosophy. The instruction is available. This instruction is only for 294 to 299. The number came under the 294 to 299. The rest number is added by removing 29. 29 को छोड़ के जो सब नंबर आएगा वो ऐड होगा 29 को बाद देना है वो इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है as per the instruction we have to do. The final number is 181.0. This is the philosophy plus 294.3. By removing 29, the final number is 181.043. This is the class number. Similarly, another example is Confucian philosophy. Here philosophy number is 181.0 and Confucian is 299.519. The instruction is available 294 to 299. So here the instruction is applicable. By removing 29, the rest number just join the number without any connecting symbol by dot. The final number is this. Likewise, these are the other examples. I will share the PDF file in your home. You practice it.
Another example is guides to a Christian life for members of a specific denominations and sects. Here, instruction to add the number following 28 in 281 to 289. The instruction is available. The instruction is only for 281 to 289. Here, the DDC told add the number by removing 28. 28 को छोड़ के जो number आएगा उसी number को सिर्फ add करना है. Here, example is guides for Methodist. Here, guides number is 248.48. For Methodist is 287. Here, by removing 28, only the number 7 will added to the guides. Then final number is 248.487. The instruction is available. The PDF file of DDC is available. I seen in the WhatsApp group. By using this PDF file, you also try to understand. And this is the third rule. Third rule is add two from the same division. How to add number from the same division? Here, the instruction from the same division or section add the number being added from some part of the schedule. Here, cotton harvesting. Here, example is cotton harvesting. Here, cotton is the concrete subject, and therefore it will form the base number. Cotton harvesting. Harvesting. This harvesting is applicable to many numbers, but here the cotton particular the book is cotton harvesting, means cotton is the base number. The class number of cotton is 633.51 from the main class 630, and in 633.51 there is an asterisk mark which explain add as instructed under 633 to 635. 633 से 635 तरह उसी के बीच जो नंबर आएगा वो उसी हिसाब से आपको ऐड करना है, इसलिए asterisk mark किया है. So we ask to add to the base class number the digit following 631.5 in 631.51 to 631.56. The class number for harvesting is 631.55, means 631.55. So the instruction is available. Add the number by removing 631.5. This is the base number you have to remove. So from harvesting you have to remove 631.5. The only number only number will as a residue is 5. So the number will the final number is 631.51. Simply add only the number 5 and this to be removed. 631.5. समझ में आया? हेलो नहीं सर, समझ में नहीं है. आपको कहाँ दिक्कत हुआ बताने से मैं क्लियर करूंगा कहाँ प्रॉब्लम हुआ. तो लास्ट जो 633.515 हुआ, एक्चुअली ये जहाँ जहाँ सब रूल है उसी रूल के हिसाब से मैं वो क्लियर किया है, उसके अलावा और कहीं नहीं आएगा ये रूल. शेड्यूल में 19th एडिशन में जहाँ सब ये रूल है उसी हिसाब से ये रूल है. ऐड
2 from the same division. Here in the rule 2, here I am given. I told these are the two base classes. One is from philosophy, another is from language. But in the rule 3, this is from the same division. Same division means here cotton is comes under the agriculture, and harvesting also come under the agriculture. These are two base number come under the agriculture. This rule is how to build number by from the same division. Here in 633.51 there is an asterisk mark in the same division. There is a asterisk mark, and the rule instructed that under 633 to 635 उसी बीच के नंबर अगर आएगा कुछ ज्वाइन करने के लिए तो ये रूल applicable होगा, otherwise this rule will not applicable. So here the instruction told us to add the base class number the digit following 631.5. अगर सेम बेस नंबर में अगर आएगा वो नंबर को ज्वाइन करने के लिए तो 631.5 ये तो रूल दिया है ना, ये 631.5 उसी में 631.5 को छोड़ के जो नंबर आएगा उसी नंबर को सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, वो जो रूल दिया है 631 टू 631.56 उसी में अगर आएगा तो 631.5 इसी को रिमूव करना है। ओनली द लास्ट नंबर विल बी जॉइन टू द क्लास नंबर 631.55 मींस हार्वेस्टिंग। हियर द क्लास नंबर इज कॉटन हार्वेस्टिंग। कॉटन इज 633.51 प्लस हार्वेस्टिंग नंबर इज 631.55. Both are from the same division. So just remove 631.5 and only the rest number is 5 is added to the main class number cotton, base class number cotton. This is the final answer. इसी हिसाब से और एक क्वेश्चन है, वो बताओ soil preparation for cotton. Soil preparation means this rule is only given in the cotton 631.5. So cotton soil preparation for cotton. Tell me what is the number? बताओ ये कैसा होगा, समझ में आता है कि नहीं? yes बताओ कैसे होगा सर 631.5 रिमूव हे जो तापरे बेस सहित लास्ट रो 1 टा ऐड होबो। soil means the rule is only for cotton, so cotton is the base number. Soil preparation से rule रे कोन कहै 631.5 टा रिमूव हे जो जोटा रिमूव पार्ट ता सेटा कोन बेस नंबर होबो कि सेटा बेस नंबर केबे होबोनी, सेटा कॉटन रे खाली सेकेंड रे सेटा जोड़ा हबो। तमरो बेस कॉटन बेस नंबर रहला कॉटन 633.51 ता संगे एटा रिमूव हे जो ओनली द रेस्ट नंबर 1 इज एडेड टू द बेस नंबर। सर जदी सॉइल प्रिपरेशन भी 631.51 अछि आ कॉटन भी 631.51 अछि तो ताले सर खाली 631.51 ही रहइबो ना? 33 कॉटन 633.5 कॉटन 633 आ से जो डीडीसी शेड्यूल से करछि से कोन थे बोका थी तार सेमती करी करछि ना। कॉटन गोटे अलगा नंबर 633.51 आ जो रूल ता ही कॉटन ऊपर से एप्लीकेबल करी सेटी एस्ट्रिक मार्क दी हला से माने ए कहछि 631 नु जदी किछि नंबर आसिला ताले एमटी तमे जोड़िबो। से माने सो एटा गोटे प्रैक्टिकल सेंस रे करी की करछली एमटी सब आसीबो एते सब बेसिक नंबर बाहर करी करछली ना एमटी जोड़िया पई हला। आ गोटे आसला कॉटन सीड
soil preparation seed एगुरा सब 631 रे रखछन 631.5 एटी 21 बळी पडला से 21 टा आधार जोडा हे जिवो हेला मु एटा सब देई देबी तुम पीडीएफ तुम सेही हिसाब रे जदि शेड्यूल कोडी पाइबो तुम पीडीएफ फाइल जदि ताको टे प्रिपेयर कर देले तमरो माने मेमोरी रे रह जिवो सेटा आ किछ प्रॉब्लम हो हेला ए सेटा गोटे गला सेम ऑफलाइन क्लास हे परिबो कि ऑफलाइन हेतल तो भलो हिता तो परौ ना दियो ई ऑफलाइन नोटिफिकेशन परे कोन कहलो हेलो जो छुट्टी होची ता परे सेटा को तुम से पचार रीजनल सेंटर रे पचार न किड स्टडी सेंटर रे पचार पचारले जदी कहिबे सेटा हले कोन एटा पढिया माने ये समस्त पाखे रे ये शेड्यूल थिबो तुम पढिले तुम से शेड्यूल को गले तुम जान परिबो एठी कोन मु जहा पढौजी तुम खाली सुनी कि जा इमेजिन करिया सेम जेमति कॉटन गोटे देई जे सेम डिवीजन भीतर ऐड करिया को सेमति शेड्यूल रे आ गोटे पार्ट रे जो जो जगह रे ए रूल टा अछि मु सेही अनुसार एग्जांपल तार करछि माने को गोटे भी स्किप होबनी सब रूल टा ही मु कहू सेकंड होछि सेकंड को जगह रे आउ अछि द क्लास नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट गोटे नंबर अछि 592 दिस इज कॉमन under the pure science means it is common under the zoology is comes under the zoology then invertebrate is 592 in 592 there is a asterisk mark and the this asterisk mark instructed that under 592 to 599 the instruction relevant to our purpose is one general topic of natural history. The instruction relevant to our purpose one is general topic to natural history. Here, so first we have to add 1 to the designated base number and further add the number following 591 in 591.3 to 591.7. Here, after go to the example, by seeing the example, you will understand. So here, physical adaptation number. One example is physical adaptation number is 591.4 and invertebrate is 592. So here we are required to add 4 to 592 plus 1. Here the instruction given 1 you have to add 1 by as a general topic as natural history. You have to add 1. So the final class number is 592 as invertebrate. 1 you have to add. After 592 you have to add 1 and after that the number physical adaptation number is 591.4. You have to remove 591 only. You have to write only the rest number 4. Therefore, the result is 592.14. Likewise, tell me the class number of evolution of invertebrates. Evolution of invertebrates. Evolution of invertebrate. What is the number? Evolution of one invertebrate. Here invertebrate is 592 and evolution is 591.38. So sir 592.138. 138. You have to add 1 after 592. Means in DDC 5 after 3 digit you have to put a dot. After 592 plus 1, then remove 591 and the rest number is 38. Then the number is 592.138.
बुझी होस तो आज्ञा सर प्रैक्टिस कर दो घरे जाई और देखो तापर आ गोटे हला एनाटॉमी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एटा नंबर कोन हबो एनाटॉमी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स सर 592.13 एटा कोन ना सर सेटा 571.3 की हां एटा होती 571.3 इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट हला एनाटॉमी ऑफ इनवर्टिब्रेट एनाटॉमी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स माने एठी तमरो मेन क्लास हे दिबो एनाटॉमी होची मेन क्लास हला एठी एनाटॉमी सर हम जानिबु केमति कोटा मेन क्लास आ कोटा ସେଇଟା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 571.3 ରେ ଏ ରୁଲ ଟା ମୁଁ ଏଠି ଉପରେ କହି ଦେଇଛି ତମେ ସେଟା ବୁଝି ପାରିଲନି ତ ଏ ଯେ ରୁଲ ଟା ଏଠି ସେ କହି ଦେଇଛି ରୁଲ ଟା 591 ରୁଲ ଟା ମୁଁ କହି ଦଉଛି ତମକୁ ମାନେ ଏଠି କେମିତି ତମେ ଜାଣିବ କୋଉଟା ହଉଛି ତମର बेस क्लास कोटा हबो से एक्चुअली जतो तुम शेड्यूल देखिबो 571.3 जतो बळे तुम एनाटॉमी पाखु दिबो से एनाटॉमी रे से गोटा एस्टेरिक मार्क दिबो एस्टेरिक मार्क देकी से लिखिथिबो जे 592 रु 599 592 रु हला सो 592 रु लिखिने राइट लिखो लेखिनी छाड़ दे से लिखिथिबो सेतरे मु नले देखि कि जदी हबो शेड्यूल रु पठै दिबो सेटा 592 रु 599 भीतर जदी किछि नंबर आछि एनाटॉमी संगे रे जोड़िया एनाटॉमी इज ए पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस एनाटॉमी ऑफ mammals anatomy of invertebrate ये जेमति सेमति आछिबो ता माने जेतबळे ई एनाटॉमी संगे कहार जोड़िया को आसिला 592 रु 599 भितरे ताले 59 टा रिमूव हेकी रेस्ट नंबर टा रहिबो ता माने जदी बेस नंबर रु 59 हटि जाउची ता माने सेटा कोन बेस नंबर रहि परिबो कि सेटी बेस नंबर सेटा रहि परिबो ना तार मेन जोटा तार बेस नंबर 590 59 टा से हटि जाउची ता माने एटा बेस नंबर केबे हि परिबो एनाटॉमी ता ही बेस नंबर रहिबो हला एटी सेमती इकोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट ए जगह रे इकोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट एटी सेमती नंबर एमती हला हला एटा होती से ऊपर नंबर अनुसार एटा हिलो इनवर्टिब्रेट्स प्लस 1 591 सेटा हटि जिवो मैं ओनली सेकंड रहिला ये जेमती सेम डिवीजन भितरे ये आ गोटे सेम डिवीजन भितरे अछि इन 294.4 Jainism the specific aspect of Jainism have been placed at 294.541 ru 294.48 आ भितरे तंगु माने से एस्टेरिक मार्क आ भीतर रहिबो 294.41 these aspect can be individualized in 201 to 209 so for this we are told by the footnote to add to the base number 294.4 as instructed under 290 for specific aspects we are to add 1 to 9 from 201 to 209 this is the instruction this instruction is available in the DDC schedule in particular Jainism part so here example is sacred books of Jain sacred books of Jain here sacred books number is come from the religion part 208.2 and Jainism is also comes under the religion part 294.4
Here the base number goes to the base number is join. So 294.4 plus 208.2. Here you have to remove 20. The instruction is available. You have to remove 20 and the rest number is added as 82. This is the final number 294.482. Likewise, tell the how to build this number. Sacred places of join. सर एग्जाम रे एमती प्रैक्टिकल पूरा हो ए टॉपिक ता ए सब्जेक्ट ता କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉନି, ଏବେ ଭାଇବା ହେଇଯାଉଛି କରୋନା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ଏମିତି ତମ ନମ୍ବର ଆସିବ, ତମେ ସିଡ୍ୟୁଲ ବାହାର କରିକି ନମ୍ବର କରି ଲେଖିବ। ଏବେ ତ ଭାଇବା ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି କରୋନା ଥିବ ଭାଇବାରେ ସରିଯିବ। सर केमती एमती गूगल मीट रे? हाँ गूगल मीट रे। आगे सर जे एग्जाम ओडा अन्य सब्जेक्ट एग्जाम ओडा सब अन्य सब्जेक्ट तो ताकर बोधे ऑनलाइन रे हेतला। ऑनलाइन हेतला माने तुमको देबे मल्टीपल चॉइस की कोन देबे तुम करिवो। किंतु एटा भी गूगल मीट रे हेतला, किंतु भाइबा हवा आटा प्रैक्टिकल करै परिबिन ना, एटा भाइबा कर देबे। सेमती ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस करे भलो होता। हां हां मल्टीपल चॉइस कोन जानि नि, किंतु ऑनलाइन हेतला। आगे ए नंबरटा केमती होबा ता को सैक्रेड प्लेसेस ऑफ जॉइन ना, एटा शेड्यूल टा टिके आडे दिले तो जान करियो केमती कोन। सर 20 टा रिमूव हे जो एटी हला बेस नंबर होची 294.4 माने जॉइन करो सैक्रेड प्लेसेस टा जॉइन करो, सेठी जॉइन टा हला बेस नंबर, सेटा ता जोडा हबो 20 टा रिमूव हबो आ रेस्ट नंबर दीटा 35 डॉट हटि जीवो, सेटा तादर जोडी दियो। तो फाइनल नंबर हो 294.438। सर पूर्व नंबर उडा करे दीटा तीनटा डिजिट उडा को रिमूव होतला, एइटारे काई दीटा होची? से माने हम हाथ रे किछ नै, से डीडीसी रे से लिखि दी जे 20 हटेबो रूल जहा अछि। हां रूल अछि जे जहा सेही अनुसार। हां रूल माने तमरो पर्टिकुलर रूल रो किछ पार्ट नै, जो नंबर पई से करिथिबो एठी जर्नलिज्म रे से रूल टा से करछि। माने सेही 294.4 भितरे जदि किछ आसिला सेटा तमे रूल ऐड करियो। ता माने न जे अन्य जो भी तमे नंबर करिकि तमे 20 जोटी आसीबो तमे ता रिमूव करदो, सिम्पली कर परिबो। पर्टिकुलर जर्नलिज्म संगे जोटी जोडा हबो नंबर से लिखिते सेठी तमे 20 हटेइबो। आउ नले के जो करते रूल जो पार्ट पई देछि सेठी ही करियो। एते नंबर कला बेले शेड्यूलटा देखियो। सर यार असाइनमेंट ओडा हमें सर लिखिबो ओइ जो यार प्रैक्टिकल असाइनमेंट ओडा प्रैक्टिकल असाइनमेंट तो मोइचे आंसर पासन कोड करि लिखि दबो। सो सेटा लिखा हबो तो? हां हां एंड करिके से एदिके से जो गुडा को अछि ये गुडा को से असाइनमेंट गुडा को से गुडा को डिस्कशन करिया टिके। कोटा से जो टाइटल गुडा को दिया है जी, टाइटल टू बी क्लासिफाइड जेमति कि डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर, से गुडा को से तार क्लास नंबर असाइन और डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस सेटा देछि। से गुडा को से हमकु टिके बुझी देले बेटर होंदा। सेटा जे मोबाइल तो शेड्यूल बर्तन नाही, त केन बाहर करिवे तमे कोन अछि WhatsApp रे पठै दै था। सर सर हमो पाखे आंसर भी गुडे अछि। कोन हेलो आज्ञा सर सर आंसर भी अच्छी हम पाखे, आपण टिके खाली क्रॉस चेक करिवे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हमें जानि पानु जे एटा माने एक्चुअली से हम किछ नाही, तेनु हमें गोटे आंसर पाइछु गोटे सोर्स को, तेनु एटा ऑथेंटिक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट वी कैन डिफाइन। एटा देखिया बुझले माने मते शेड्यूल टा को देखिया पड़ियो, तुम पठै देले मु ताको कॉलेज रा मोर शेड्यूल रु चेक करते ठीक के बोल। हां कारण शेड्यूल नहले मु केमति मु एटा एग्जांपल सब करै की करछि बेले ए सी एग्जांपल माने मते शेड्यूल माने आई हैव टू गो थ्रू दिस शेड्यूल। मते शेड्यूल भितर गले मु जेकी ताको पाइबी ठीक के भूल हेति केमति जॉइन करछि। जेमिति फॉर एग्जांपल गोटे अछि हमरो डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर, ताले एठी हमें कोडा को केमति कोन खोजिबा गोटे सारे हमको टिके आईडिया दियंतु। हां डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर माने एठी तमरो एटा सारे टाइटल
एटा सर होची टाइटल डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर आकु माने आर क्लास नंबर असाइन हमें करिवो और डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस करिवो हां माने एटा तुम कोन माने डायग्नोसिस ऑफ कैंसर माने कैंसर हेइछि बेले तुम डायग्नोसिस होबो ता माने एठी बेस नंबर रहिबो कैंसर नंबर ता तुम खोजिबा आग शेड्यूल एटा मेडिकल ये पार्ट आसीबो हमर हेल्थ साइंस 610 हैला से 610 परठारु तुम गोटी गोटी खोजी खोजी जीवो जोटी कैंसर भाला सेही नंबर संगे तमरो जोड़िबो कोन डायग्नोसिस कैंसर डायग्नोसिस मोर तो डायरेक्ट नंबर हिथियो बोले बाहर जिवो ना ना डायग्नोसिस ता बोले टेबल 1 रु जोड़ा हिथियो टेबल 1 ये करके जोड़ा हिथियो कोन नंबर तो सेटा हमरो एठी गोटे होची जणे एटा प्रिपेयर करचंदी सेटा क्लास नंबर असाइन करचंदी 161.07561 एटा तो मते लागुची भूल बोली ना 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 माने 611 जो ये हिथि सेटा ये करा हितो कोन कहउछ से सारे सेटा देई जदी डिजीज को नेई जदी गोटे मिनिट दो मैं देखि कौन कहलो डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर केते नंबर कहउतलो तमे केते तम नंबर केते कहउतलो 61 हेलो 616 हां 616.15 161.07561 ठीक अछि नंबर ठीक अछि हां आगे ठीक अछि सेटा जानिबार अछि सेही गुडा ମୁଁ ନଉଛି ତମର एटा सर डीडीसी के डायरेक्ट अछि ना माने एटाକୁ तुम करिया पड़ियो माने डीडीसी रे तमर माने 616 होची तमर ब्लड कैंसर रा आछला हैला ब्लड कैंसर ये ता देरे तमरो जोड़िया पड़ियो आ से कोन असाइनमेंट देकी तुम खाली डायरेक्ट नंबर दे देबे तुम से करियो इंदा होबे ना सर सब थियोरी उडा एग्जाम सरला परे प्रैक्टिकल टा हुए ना केमति कोन बोधे सब थियोरी सरला परे प्रैक्टिकल नहीं सर ये क्लास सरला परे प्रैक्टिकल गुडा कर दियंती ना सेमती हुए आ ହେଲା ସେ ସେମିତି ହିଁ ତମେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପीडीएफ विजिबल रहउस तो यस सर रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च माने तार माइक्रोबायोलॉजी जो बेस नंबर रिसर्च ता तमरो टेबल 1 रसी की जोड़ा हबो ହେଲା से नंबर कोन अछि सर रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी टा अछि हमरो 575.11 कोन अछि नंबर 575.11 575.11 आगे माइक्रोबायोलॉजी
ସେଠି ସେଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଟା କରିଛି ସେ 576 ଟା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଆଉ 0.11 ଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଥିଲେ ଗଲା। ନାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ସିଡ୍ୟୁଲ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାନେ ହଁ ମାରିଦେବି କେମିତି? ସିଡ୍ୟୁଲ ଟିକେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ସାର୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲେଖିକି ଦେଇଦବ। ନାହିଁ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା ସେଟା। ତମର ଫ୍ୟୁଚର ତମର ଦରକାର ନା, ତମ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଡଟ୍ ବି ମାନ ନଥିବେ। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ନମ୍ବର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପେନ୍ ଛାପି ହେଇଯାଇଛି, ଡଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନମ୍ବର ଲେଖିଥିବେ। ବୁଝିଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ କପି କଲେ ବି ସେ ଠିକ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖିବା। ତମେ ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ସାର୍ ଆମେ WhatsApp ରେ ପଠେଇବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ କହିବେ ଆଉ। ପଠେଇଦବ ଦେଖିଦବା ହେଲା। Yes sir। ସେ ତ WhatsApp ରେ ପଠେଇଦବ, ଖାଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଯୋଉଟା ତମେ ନ ଜାଣିପାରୁଛ, କେତେ ନମ୍ବର 5-6ଟା ନମ୍ବର ଥିବ ବୋଧେ ଆଉ। 5ଟା ଟୋଟାଲ ଅଛି, 5ଟା ଭିତରୁ ଡାଉଟ୍ 3ଟା ଅଛି, 2ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖି ପଠେଇଦବ, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଲେକ୍ସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ। କଲେକ୍ସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ବି ସେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି। ଏଠି ସେ କହିছে 02 ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଲେକ୍ସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମାନେ ସେମିତି 02 ଟା ହଟିଯିବ ଆଉ କଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଖି ତମେ କରିବ ଆଉ। ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି, ତମେ କରିବ ଆଉ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିଁ ସବୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ରେଫରେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଇନ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟା ରେଫରେନ୍ସ ସର୍ଭିସ। ରେଫରେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଟା ହେଲା ବେସ୍ ନମ୍ବର, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ 02 ଟା ହଟିଯିବ ହେଲା। ବୁଝିଲା ତ? ଏଇଟା କାଲି ରୁଲ 4 ମାନେ ସବୁ ଏକା ବେଳେ କଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। ରୁଲ 4 ଆଉ 5 ଟା ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆପଣ ଟିକେ ନାକୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ମାନେ ଆମେ 227 ର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ, ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ତାପରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ତ ଡିଡିସି ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖିବୁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ କୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଣିବ? ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ତାର କଣ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏଗୁଡାକ କରିପାରିବୁ। ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାନେ ଏଟା କୋଉ ଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ ଅଛି ନାଇଁ? यस सर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କଣ ଅଛି, ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେବି ତମକୁ। से सर BLIE-227 ଟା ଆମର ହଉଛି, ତାର टाइटल होची डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। ତମର ସେଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଲଗିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି କାଟାଲଗିଂ ଟା କାଲି ଏଇ ଯୋଉ ରୁଲ ଆଉ ଦିଟା ରହିଲା ଦେଖେଇଦେବି। ତାପରେ କାଟାଲଗିଂ କେମିତି କରନ୍ତି ସେଟା କାଲି ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ହେଲା। सर ये क्लासिफिकेशन रे हमें कौन कौन माने इंपोर्टेंट जिंस उडा की मन रखिबू आउ एग्जाम जदी हला हमें करि परिबू। ତମର ମେନ୍ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ। ମନେକର ତମର ଭାଇବା ହେଲା ତମ ଭାଇବା ହେଲେ ତମକୁ ସିଏ ପଚାରିଦେବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ମେନ୍ କ୍ଲାସ କୁହ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମେନ୍ କ୍ଲାସ ଟା ସିନା ତମେ ମନେ ରଖିଥିଲେ କହିବ, ତମେ 510 ହଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମେନ୍ କ୍ଲାସ, ତମେ ସେଟା କହି ନ ପାରିଲେ ଭୁଲ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମେନ୍ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ବେସିକ ମେନ୍ କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା ରହିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଜୁଲୋଜି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତାର ପଠେଇଦେବି ଗୋଟେ WhatsApp ରେ ଅଛି ସାର୍, ବୁକଲେଟ ରେ ଅଛି ଆମର। ସେ 100ଟା ଅଛି, ଯୋଉ 10 ଡିଭିଜନ ଯୋଉ କରା ହେଇଛି ସେଇଟା ଅଛି ଆମ ପାଖେ। ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଦବ। ମେନ୍ କ୍ଲାସ ମନେ ରଖିଲେ ତମର ଇଏ କରିପାରିବ। ଏଟା ହଁ ସେଣ୍ଡ କରିବ ଗ୍ରୁପ ରେ। କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ସେ କହିଲେ ନା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଡିଏଫ ଟା, ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ହଁ ସେଟା ମୁଁ ଇଏ କରି ପଠେଇଦେବି। ओके 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 आई विल सेंड। ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଅଛି ମେନ୍ କ୍ଲାସ, ସେଇ ମେନ୍ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏ ରୁଲ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଆସିବ, ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ରୁଲ ମାନେ ତା ମନରେ ପଡିବ, ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବ।
सर एटलीस्ट केतेटा रूल अछि एमती रूलटा देखिए 6टा रूल अछि 6टा रूल अनुसार तुम आज्ञा एटी 6टा रूल देखिए ना गोटे होची सेम मेन क्लास भितरे माने 001 ରୁ 999 भितरे दीटा बेस नंबर जोड़ा हबो दीटा बेस नंबर माने जेमती मु कहिल तम ना मैथमेटिकल एनालिसिस इन लाइब्रेरी माने एठी लाइब्रेरी गोटे मेन क्लास आ मैथमेटिक्स एनालिसिस गोटे मेन क्लास ए मेन क्लास जोड़ा हबो एटा सिंपल जोड़ा है आ सेकंड होची add a class number from some other small person माने गोटे बेस नंबर आउ गोटे बेस नंबर माने दीटा डिफरेंट जो सेम बेस नंबर भीतर स्मॉल पर्सन सेमती तबे थर्ड होची सेम डिवीजन अंडर ए सब रूल अछि ना ए 6टा रूल अनुसार हमरो क्लास नंबर हम करिए पड़ियो लास्ट रूल ता होची तम शेड्यूल रे गोटे नंबर थियो टेबल 1 रे गोटे नंबर थियो माने जो वॉल्यूम 1 रे वॉल्यूम 1 भीतर ता देसो टेबल अछि टेबल 1 ता गोटे अछि टेबल 2 होची हमरो जियोग्राफिकल रीजन सब अछि टेबल 2 रे एम सब अछि टेबल 3 ता होची बोले लैंग्वेज पई यूज हो टेबल 4 लिटरेचर एम सब अछि तार जोड़ा हबो नंबर सेटा होची लास्ट सेटा मु काली टिके होची देखै देबी हो टेबल 1 केमती तुम जोड़ियो है बर्तमान तुम मेन क्लास गुरा सब मन रखो रूल जदी पारुछ से पीडीएफ फाइल रो देखो आज्ञा सर आउ क्लास रा बुक रो कोड अछि कोन गेलो सर मेन क्लास रा बुक रो कोड अछि मेन क्लास गुरा तो तमरा जो ये बही रे देछ भाई पेज नंबर जो 3.3 रे अछि हमरो ये गुडा को हला 100 डिवीजन जो ये गुडा को एक पेज अछि 36 रे 36 36 37 रे गुडे अछि हां 36 रे अछि 490 पर्यंत तापर आउ कोडी अछि तमे देखि दबो से नाही 990 पर्यंत अछि ए बही रे तो मोटर कोन अछि हां 990 दे हां ए मेन क्लास गुरा मन रखि दबो तापर तमरो केतेटा नंबर अछि अनअसाइन्ड नंबर अनअसाइनमेंट दीज आर ऑल आर इन स्क्वायर ब्रैकेट से नंबर गुरा ही मन रखि दिबो ए तमरो से भाई बारे पचा देबे टेल मी द नंबर जो तुम कहितले लास्ट नंबर ता केते 419 क्लास नंबर 419 दा मन करो सेटा अनअसाइन्ड ता पई किछि क्लास नंबर डीडीसी हैज नॉट गिवन एनी क्लास नंबर से जा तुम 419 तो गोटे कहि दो भूल है फोन नंबर कथि सेटा अनअसाइन्ड नंबर गुरा भी के मन रखि दो को नंबर सो असाइन हेनी माने वैकेंट 040 टा सर भी अछि 040 नथिबो जोटा अनअसाइन्ड 040 अनअसाइन्ड सेटा मन रखिबो 040 अनअसाइन्ड जोटा अछि सेटा मन रखिबो हला केतना नंबर भी अनअसाइन्ड थाए देखि दबो एथरे सब नाही मु पठै देबी माने मेन क्लास जोटा मन रखिया पे पठै देबी सर भाईबा ପାଇଁ जोटा जोटा इंपोर्टेंट सेटा पठै दे ग्रुप रे हां पठै देबी आगे आ तमरा कैटलॉगिंग माने हमरो कैटलॉगिंग बही पढलो नि तमरो ये 227 रो से जो से पढी जो आईडिया टिके कैटलॉगिंग रे सारे बुझी होजी क्लासिफिकेशन अपेक्षा कैटलॉगिंग टा टिके इजी लागुची माने tell me two types of cataloging method से जो हमरो अछि ACR2 और MARC 21 सेटा तो मार्क 21 दीज आर यूज्ड इन द लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम से टैगिंग गुरा का हमर जो सॉफ्टवेयर रे जिंदी हुए से मार्क ये रे हमर करा दी सीधा ये हमर कैटलॉगिंग रूल होची मोस्ट पॉपुलर वो होची ACR1 है वेरीफाई जे की 2 हे गेलानी ACR2 आ वो होची कॉलम क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सेटा हमर इंडियन एसआर रंगनाथन सेटा करछन सेटा हमर यूज होनी तो सिलेबस रे भी नाही हमर होची ACR2 फॉर्मेट रे हमर करिया पड़िबो माने ये नंबर
ACR2 ରେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି କେତେଟା ସରିଲାନି ଟିକେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହୁଛି ଲେଖି ଦେଇଥା ମାନେ କେତେଟା ତାର ଏରିଆ ଆଉ ଇଏ ଲେଖି ଦଉଛି देखो areas of ACR2 areas of ACR2 it is these are two parts in ACR2 there are two parts of area first one part 1 of ACR2 देखो এটা মানে 9টা পয়েন্ট আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখব part 1 of ACR2 part 1 of ACR2 first is title and statement of responsibility area title and statement of responsibility area and second one is edition area and তারপরে হচ্ছে imprint area মানে সেটা place of publication name of the publisher and date of publication এই তিনটা রইবে imprint area Sir, second one is second है edition area first है title and statement of responsibility area second edition area third is the imprint area सर इम्प्रिंट में प्लेस एरिया और डेट ना सर इम्प्रिंट में प्लेस एरिया और डेट तादरे असलो प्लेस publication place of publication name of the publisher ଆଉ year of publication date of publication ହେଲା ତାପରଟା ହଉଛି collection area collection ମାନେ ତାଦରେ ରହିବ page ଆଉ size ଆଉ illustration statement area ଯାହା ଥିବ ସେଟା ସବୁ ଆସିବ page volume size ଏ ସବୁ ରହିବ ହେଲା ତାପରଟା ହେଲା series area ତାପରେ notes area ତାପରଟା ହଉଛି ISBN area and last one is tracing area and part 2 of ACR2 is access point सर 7 नंबर तो कोनी नोट एरिया परटा note area होची ISBN area ISBN last one is tracing area এটা হলা part 1 of ACR2 আর part 2 होची access point ହେଲା जो 5 लाइन do you सर know एटा गोटे हेला तो ACR2 आ सर रंगनाथन कोन सर कोटा कोथरे सर रंगनाथन होची क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सेटा तुम कोर्स रे नाही खाली नाटा मन रखता क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 5 लाइज ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जानतो सब यस सर टिके टिके सर जानि छु
मैं कहीं तुम सेटा तो थिबो ना माने पार्ट 1 फिलोसफी प्रैक्टिस रो बोधे थिबो ना कोन तुम अगेन सर टेल मी व्हाट आर दिस सर बुक्स आर फॉर यूज आउ सेकंड टा होची so the books are for use every reader his her book every book its reader then save the time of the reader library is a growing organism एगो सब मन रखिथिबो माने तुम जो भाइबा रे पठेई करंती हला से तो सब पचारन से खाली कहि देबे जे टेल मी द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेशन हला हला का देन काली ताले क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग सम इंपोर्टेंट टिप्स आई विल टेल आ सर गोटे इंडेक्सिंग भी अछि ना कोथरे तमरो अछि कोर्स रे इंडेक्सिंग हां इंडेक्स 7 रे ही गोटे इंडेक्सिंग भी अछि माने इंडेक्सिंग न तो से जो रिलेटिव इंडेक्स कथा कहछ तो ना एटा पार्ट 1 बोलता अछि सेटा को पार्ट 2 रे अछि ना कोन ब्लॉक 1 ए तो गोटे बही एटा बा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस तो गोटे इंडेक्सिंग तो किछ नाही सेटा सर वॉल्यूम 3 टा जो डीडीसी का वॉल्यूम 3 टा जो इंडेक्सिंग सेटा माने क्लास स्टार्ट रे कहली सेटा गोटे रेडीमेड माने लाइक डिक्शनरी all subjects are assigned here in alphabetical basis मनोर तमरो हटा तो गोटे दरकार पड़ला माइक्रोबायोलॉजी नंबर ता तमे आ शेड्यूल भीतर न जाई कि अल्फाबेटिकली ये करी माइक्रोबायोलॉजी खोज देले से नंबर ता करबे त लिख दबो सेटा डायरेक्ट नंबर आगे the number you tell earlier diagnosis of blood cancer you never get there the only main basic classes are assigned there in alphabetical basis like a dictionary सेटा रेडीमेड तमरो हठात किन दरकार हैला एग्जाम रे तमरो समय दरकार प्रैक्टिकल एग्जाम सेडी माइक्रोबायोलॉजी नंबर ता तम सेडी खोज दबो कि एमदी इंडियन फिलोसफी गोटे भाग कर दबो अन्य नंबर पाइबेनी से ठीक है सी यू टुमारो 7 o'clock थैंक यू सर ओके सर थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू सर गुड नाइट